A portfolio plays a very crucial role in freelancing journey. We are learning to design portfolio website on Canva. This is part 2 of 3 video series. So without any further delay, let's start this video and watch this video till the very end. This is the part 2 of how to design a portfolio and yeah, हमने पिछले वीडियो में इतना बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लिया था. Now I'll show you how you can put in your दूसरे टाइप की पिक्चर जैसे मैंने आपको दिखाया था कि वो बैकग्राउंड किसी और से रिलेटेड आ रही है. I'll show you how. So just simply open a new tab, go to Google and search what you want to. Like किस चीज़ की फ़ोटो चाहिए. I'm using LinkedIn. I'm creating a portfolio for myself, so I'm just using LinkedIn. अगर आप Canva की बना रहे हो, like you are a graphic designer, आप Canva का ले सकते हो कि Canva पे कैनवा का एक बैकग्राउंड ले सकते हो एंड पुट इन देयर. तो यहाँ पे लिंक्डइन डिस्प्ले चाहिए मेरे को, लिंक्डइन फाइल चाहिए. जस्ट सर्चिंग इट. वो किसी की प्रोफाइल, ये वाली प्रोफाइल पे जाते हैं, अच्छी लगी हुई. तो या आई जस्ट कॉपीड इट. यू कैन ऑल्सो डाउनलोड इट. डाउनलोड करके भी आप यूज़ कर सकते हो. मैंने कॉपी किया, अभी कॉपी करके कम बैक टू योर डिज़ाइन या पेस्ट इट. ये एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है इसलिए ये टाइम ले रहा है. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज 3 डॉट्स, लेयर, इट इज सेंड बैकवर्ड. Send backward. Okay, now you have to reduce its transparency. अगर वैसे टैप पे हो जाता है, वरना 3 डॉट्स में जाके you can need to reduce it transparency. एक्चुअली स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है इस करके लैपटॉप फ्लैग करता है. स्क्रीन रिकॉर्डिंग, या आई हैव रिड्यूस्ड इट्स ट्रांसपेरेंसी एंड या यू कैन सी कि एक बैकग्राउंड में आ रही है एंड बैकग्राउंड में उसके ऊपर उसका यार दैट्स इट. ऐसे आपकी एक बैकग्राउंड भी बन गई. नाउ यू हैव टू इंसर्ट योर नेम हियर, नेम एंड सर्विसेज दैट आई मेंशन्ड. यू कैन फॉर श्योर यूज these types of combinations. अच्छे fonts के combinations बने होते हैं. you need to use them. क्या बुराई है यूज करने में. ये 2 बार खुल जाता है इसलिए आप डिलीटेड है. ये एक यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया. नीचे यू कैन मेंशन योर सर्विसेज, लाइक जो भी आपकी सर्विसेज है. यूट्यूबर, मैं अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बिल्ड कर रही हूँ. यूट्यूबर, लिंक्डइन होस्ट, राइटर. You can mention out your services, place it as you want to. Okay, place it wherever you want to, and of course what I did was I uploaded my photograph also. So yeah, you can also put in your photograph here because personal photographs create trust. So here I'm with my photo. You have other formal photo, put in that, whatever you wish. It's completely your portfolio. So yeah, I've done this. Now coming to second slide, you need to showcase your proofs. So you can showcase your proofs just like अभी मैंने थोड़ी ये चीज़ें डाली हैं. I don't know क्या पढ़े हैं. I'm just putting it here and there. ठीक है. I have a social proof. You can check out my real portfolio and see कि कैसे बनाया था.
क्या क्या चीज़ मेनली जैसे इंक्लूड की थी. Add a text box, put in put in your, you can create bullets using here. या फिर bullets number वाला bullet है generated in plus need. Second is got internship. I'm just writing whatever I want to. I'm not wondering into that. Yeah. यहाँ पे मैंने अपने थोड़े अपना सोशल प्रूफ डाल दिया कि हाँ मैंने ये किया. I did this. You can change its formats using this thing. तो ये करना है, मैंने ये कर दिया. मेरे को कुछ भी करना है, you can simply. तो ये पसंद आया, मैंने इंटर्नशिप का बदल दिया, मैंने ये फॉन्ट कर दिया. साइजिंग यू कैन चेंज, और या फिर कलर यू कैन चेंज, बोल्ड, इटैलिक, अलाइनमेंट यू कैन चेंज. एंड एनिमेशंस पे अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में. इंटर्नशिप पे एनिमेशंस की बात करते हैं. तो यहाँ पे मैंने ये डाल दिया. दैट्स इट. So yeah, and that's it for this part. I don't want to make this video so lengthy. So yeah, subscribe for part 3 जिसमें मैं I'll teach you how to apply animations and how to apply links and how to finally publish your website. So stay tuned for that and make sure to subscribe to my channel. Check out the real portfolios in the description. That is a gift for you guys. And of course, check out my previous video in which I have told about what things you need to include on your portfolio, as well as you can check out those things like my previous video about this and one video about analyzing my real portfolio in which I made you analyze my real portfolio. So you can surely check them out. So make sure to subscribe to my channel so that you don't miss out to these videos. Wishing you lots of success. This is Samiksha Juneja signing off.